केना ओटियो रेडी जयजना जय श्रीराम सुहानी प्रियंका प्रवानी सार्थक प्रीति पवन पिंकू पिंकू माने हम पिंकू सर देवज्योति श्रद्धा किटू विश्वजित सार रागी ना ना सार रागिबे काहे कि बाकी तुम मन मन दुख थिला हम बुझी परछि राग सेमति नाही किछि तुम मन को राग कोन तुम तम फैमिली मेंबर्स सब विश्वजित गुड इवनिंग एवरीवन एंड 46 वाचिंग 50 हो माने संगे संगे स्टार्ट करिया हमर तो रूल 50 हो माने संगे संगे स्टार्टिंग सॉरी 65 तो आज हम टार्गेट करके चलियो दैट इज सर आपण केमिति अछंती प्रीति पवन भगवान को दयार भलो अछि एंड आपण केमिति अछंती बहुत एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करिया चलो हिरणमया श्रद्धा किटू शिप्रा चलो फर्स्ट क्वेश्चन द लेडिक सेल व्हिच आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ ए क्वेश्चन करी करी तुम पूरा घोसी हे जोडी जंत सुआ को गोटे जिंस घोसी सुआ पूरा घोसी हे जाए तो एई बेला क्वेश्चन करी करी तुम पूरा घोसी हे सारियोनी द लेडिक सेल व्हिच आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन इंटेस्टिनल म्यूकस ग्लूकागन एंड्रोजन कोन आंसर जहार जहा परसेंटेज लास्ट को कहबो लास्ट को देखिया हला मिस्टर दास लास्ट वर्ड कहबो मझिरा एमते परसेंटेज डिस्कशन करिया नि लास्ट को करिया चलो आंसर कोन श्रद्धा किटू सार्थक दैट इज एंड्रोजन तापर मते को कि दैट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागन इज इंपोर्टेंट टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल और टू डिक्रीज ग्लूकागन टा जनरली इंक्रीज करे ब्लड ग्लूकोज लेवल ना डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे कोन आंसर blood glucose level will increase by the glucagon or blood glucose level will decrease by the glucagon कोन हबो ग्लूकागन कोन करे जेतोले ब्लड ग्लूकोज लेवल को जनरली इंक्रीज करिवो जेतोले ब्लड रे ग्लूकोज लेवल कमी जो फॉर एग्जांपल किछि कॉज पई तमे फास्टिंग करछो बा अन्नसन करछो कि मोर फोन दरकार बिना फोन हेले मु खाइबिनी सो दैट तम बॉडी को तळे खाइबा न आसीबो बा तमर जीआई ट्रैक्ट बा एलिमेंटरी कैनाल को तळे खाइबा न आसीबो अल्टीमेटली कोन हबो ना तम लिवर जो स्टोर करथिबो ग्लाइकोजन तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज रे कन्वर्ट होबा एंड ग्लूकोज टा ब्लड रे इंक्रीज हो ताले इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल देन मते को कि ग्लूकागन इज रिलीज फ्रॉम पैनक्रियास adrenal from which gland generally the glucagon will release कोन हबो सर फास्टिंग इज गुड और बैड फास्टिंग इज गुड सेतो बेले जेतो बेले तमे डेली फास्टिंग करले बैड पूरा कंटा कंकी हि जिवो बट मासु को थरे दी थर फास्टिंग करे नियाती दरकार बिकॉज़ तम दैट इज लिवर जहां भी ग्लूकोज स्टोर कर रखितो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन सेटिके यूटिलाइज होबा दरकार बट डेली फास्टिंग करेटा असुविधा मासु को थरे थरे करिवो चलो pancreas बढ़िया pancreas is otherwise called as heterocrine gland then मते को कि islets of Langerhans is an part of exocrine or endocrine islets of Langerhans is an part of exocrine part of pancreas or endocrine part of pancreas कोन हबो islets of Langerhans is an exocrine part or endocrine part सुदीप्ता प्रियंका को देखो आज केमती लागिला बट तमे मन दुख करके साडे कि सेही कथा नै कि बसिबो पूरा लाइव सेक्शन काली पूरा खां खा लागुतला कोन हबो दैट इज islets of Langerhans is an endocrine part of pancreas बढ़िया चलो तृप्ति चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा अच्छा मते कोइ कि जनरली प्रोजेस्टेरोन इज रिलीज फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लुटियम प्राइमरी फॉलिकल ना सेकेंडरी फॉलिकल प्रोजेस्टेरोन इज रिलीज फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल आ कॉर्पस लुटियम कोन हबो आंसर दियो यस को आंसर कोन हबो मूव ऑन क्रिकेट शॉट्स that is progesterone is released from the corpus luteum perfect which one of the following pair of hormone are the examples of those that can easily pass through the cell membrane
and the target cell bind to the receptor inside. Generally question पचारला कि गोटे को हार्मोन टा गोटे सेल को बाइंड करने पाई बा सेल भीतर को जीवा पाई ताको कौन सी रिसेप्टर दरकार नहीं सीधा मन रखिबो स्टेरॉयडल हार्मोन सीधा जीवो कौन मन रखिलो प्रोटीनियस हार्मोन स्टेरॉयडल हार्मोन में जानि छे तो ये मन रखिबो स्टेरॉयडल हार्मोन सीधा जीवो किछि मानियोनी देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रोटीन फॉर द स्टेरॉयडल हार्मोन सो स्ट्रिक्टली यू हैव टू रिमेंबर स्टेरॉयडल हार्मोन जे रहला सीधा जीवो प्रोटीनियस हार्मोन को सेल मेम्ब्रेन ऊपर गोटे रिसेप्टर दरकार बट स्टेरॉयडल हार्मोन को कौन सी रिसेप्टर दरकार नहीं मन रखिबो डी कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन बढ़िया कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन बढ़िया मन रखिबो सीधा पूरा स्टेरॉयड सीधा बढ़िया दीप्ति बस एस पर स्टेरॉयड एस पर सीधा चलो which is correct to say about the hormone कौन होला आदरे क्वेश्चन पचराबो ओके ऑक्सीटोसिन देन मते को कि एई दुटा ऑप्शन भितर सोमाटोस्टैटिन एंड ऑक्सीटोसिन मते को कि सोमाटोस्टैटिन जनरली कोड रिलीज हुए आ ऑक्सीटोसिन कोड रिलीज हुए नॉट सिंथेसाइज मते को कि ऑक्सीटोसिन टा जनरली कोड रिलीज हुए एंड सोमाटोस्टैटिन टा कोड रिलीज हुए सोमाटोस्टैटिन इज रिलीज फ्रॉम डैश and oxytocin will release from dash कौन हो आंसर 101 watching 108 ट्राई करिया दैट इज हमर मैक्सिमम प्लस को आसु जॉइन करंतु पैनक्रियास रु सोमाटोस्टैटिन लक्ष्मी बढ़िया अछि ऑक्सीटोसिन विल रिलीज फ्रॉम एंड आई एम स्ट्रिक्टली जानि छे ऑक्सीटोसिन एंड vasopressin these two hormones are actually synthesized from that is hypothalamus what would release from posterior pituitary ହେଲା एटा बढ़िया क्वेश्चन है एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज अदरवाइज कॉल्ड एज लव हार्मोन और बॉन्डिंग हार्मोन जो लव पाई तमर मार्क खराब रहले भी तम पेरेंट्स माने तुमको सपोर्ट करछन पेरेंट्स माने तुमको लव करछथि ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन सो ऑक्सीटोसिन इज लव और बॉन्डिंग हार्मोन एंड एंटीडायरेटिक हार्मोन व्हिच इज इंपोर्टेंट टू प्रिवेंट द वाटर लॉस और टू प्रिवेंट द एक्सेस वाटर लॉस थ्रू द मैच्योरेशन तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जनरली रिलीज हुए ओके देन सोमाटोस्टैटिन हम जानछे पैनक्रियाज रे अल्फा सेल रो ग्लूकागोन बीटा सेल रो इंसुलिन एंड बीटा सेल रो सोमाटोस्टैटिन बढ़िया समस्तिंगर पायल किछि सपोर्ट मिलनी जोटी केही ना जेटी आमे अछु डोंट वरी पायल चलो व्हाट इज द करेक्ट टू से अबाउट द हार्मोन एक्शन इन ह्यूमन हार्मोन एक्शन ऑफ ह्यूमन रो करेक्ट कोटा को हले ग्लूकागोन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस हम जानिछे अल्फा सेल रो रिलीज होय कोन ग्लूकागोन एंड जुड़ जुड़ के देखाउ जी कि ग्लूकागोन इज नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम बीटा सेल हम जानि छे इंसुलिन विल सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल सो हियर ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट देन सिक्रेशन ऑफ थाइमोसिन इज स्टिमुलेटेड विथ एजिंग जेते एज बॉडी बॉडी जीवो थाइमस ग्लैंड रो जो हार्मोन रिलीज हुए थाइमस हम जानि छे देयर इज द थाइमस ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द ब्रेस्ट बोन एंड जेते एज बॉडी बॉडी जीवो थाइमस ग्लैंड आस्ते 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 डिजेनरेट ही जीवो and thymus gland is otherwise called as the garage of T lymphocyte को maturation करियर हेल्प के करिवो that is the thymus gland and thymus gland जत्ते degenerate हे जीवो thymus gland जो हार्मोन रिलीज होची सेटा भी thymosin टा लो सिक्रेशन हो एमडी कौस्टर कोन आंसर in females FSH first bind with the specific receptor of ovarian cell membrane FHS एटा कोन FHS बोली सेमति किछ नाही FSH stimulate the secretion of estrogen and progesterone FHS लिखा है तो प्रिंटिंग रे FHS होचन भाबो हमको तो करेक्ट पचार तो सी इज करेक्ट एटा थाइमोसिन इज स्टिमुलेटेड विथ एजिंग नो एजिंग जते बॉडी बॉडी जो थोड़ी थाइमस ता एजिंग बॉडी बॉडी गले थाइमस ग्लैंड ता डिजेनरेट हे जीवो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द एंडोक्राइन सिस्टम करेक्ट विथ रिलेशन टू एंडोक्राइन सिस्टम को नेकी कोटा करेक्ट कोन हबो लाइक 48 अछि लाइक सिंबल रे गोटे क्लिक करो प्लीज एंड संजुला थैंक यू कि तमे एति के कहूछ पिला को अपील करछो सो दैट थैंक यू चलो कोन हबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशनशिप टू द एंडोक्राइन सिस्टम एडेनो हाइपोफाइसिस व्हिच अदरवाइज कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी देखो पढो बोलछे तमे एडेनो हाइपोफाइसिस अंडर द डायरेक्टली न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस हम जानि छे हाइपोथैलेमस रो डायरेक्टली कांटेक्ट किए थाए न्यूरो हाइपोफाइसिस बा पोस्टीरियर पिट्यूटरी हबो नीटा हला
then organ in the body like gastrointestinal tract, heart, kidney, liver do not produce any hormone. एटा भी भूल कहीं ना हमें जानी चे gastrointestinal tract hormone release करे, heart release करे, तो एटा भी भूल non nutrient chemicals produced by the body in trace amount that act as an intercellular messenger are known as hormone. Perfect. Releasing and inhibitory hormones are produced by pituitary gland. देखो हमें जानी चे hypothalamus जहाँ को कहा जाए master of the master gland. For example, in your home, suppose your father is master of the master gland and your mother is master gland. So father जेमती mother को regulate करती बा हमें कही परिया mother को that is address दे परिवे कि that is releasing and inhibiting. So hypothalamus ही रेगुलेट करि परिबो बा हाइपोथैलेमस ही रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करिवो तो एटा यदि हाइपोथैलेमस तांता ठीक हेई तांता ठीक अछि बिकॉज़ पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस तो सी इज करेक्ट देन मते को कि जनरली एटी क्वेश्चन पचरा जनरली हार्ट रो को हार्मोन रिलीज हुए हम जानि छे हार्ट इज नॉट ए एंडोक्राइन ग्लैंड बट इट कैन एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड बस संजोले राइट ए क्लास ता तम मान करो सर नमस्ते मते जानी परली कि लव फ्रॉम मथुरा नगरी बरगढ़ ओके प्रताप जानी परली इट्स ओके प्रताप चलो कौन हम एते कम पिला कौन 105 मात्र चलो कौन हम ताले ठीक है हार्ट रो वाल रिलीज हो एएनएफ में जितोड़ जनरली ब्लड प्रेशर बढ़ी जीवनी गोटे बढ़िया कथा मन रखिता जदि कौन सी कारण आम सोसाइटी जेतु बंचुचे तो केतोड़े आम देखी जनरली लोक मानकर आस्ते आस्ते हार्ट पेन स्टार्ट हुए बा चेस्ट पेन स्टार्ट हुए जहाँ को आम एंजिना बोली कहूचे तो बेसिकली कौन हुए ना जो चेस्ट पेन स्टार्ट हुए फॉर एग्जांपल सपोज आम जानिचे हार्ट रो मसल को गोटे आर्टरी अच्छी कोरोनरी आर्टरी जे कौन करे ना हार्ट मसल को जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करे तो जदि कौन सी कज रु ओबेसिटी बा हम जाने जदि मैक्सिमम वेट बढ़ी जो ओबेसिटी हो कि एनी कज रु बढ़िया श्रद्धा सिंह एनी कज रु जदि कोरोनरी आर्टरी रे जमा फैट कोलेस्ट्रॉल जमाट गेला डेली तुम फास्ट फूड खाउछो डेली तुम चिकन मटन ऑयली जिंस खाउछो एंड सपोज एनी कज रु तुमरो कोरोनरी आर्टरी रे फैट कोलेस्ट्रॉल एगुडा सब जमाट होउची तो जनरली कौन हो जो ब्लड टा जनरली हार्ट वाल को जीवा कथा तुम गोटे केनाल रे जदि डिपोजिट हो जेंति केनाल रे प्रेशर बढ़ियो सो दैट हार्ट वाल रे प्रेशर बढ़ियो दैट इज ब्लड वेसल ऊपर ब्लड प्रेशर बढ़ियो एंड जेतोले ब्लड प्रेशर जनरली ग्रेजुअली इंक्रीज हेई जीवो हार्ट वाल रिलीज करिवो कोन एएनएफ जे कि कोन करिवो ना भासो डायलेटर बा एई वाल टाको वाइड करियर हेल्प करे सेमति कि जनरली जेतोले एंजिना हुए बा चेस्ट पेन हुए घर मानकर कुआ जाय कि जदि अदा रस अछि तो अदा रस को छेची कि इमिडिएटली दवा पाई काहे कि ना जनरली अदा रस रे जो नाइट्रिक ऑक्साइड थाए तो जदि कोनोसी कॉज रु कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होउची बा कोनोसी आर्टरी ब्लॉक होउची जो आर्टरीटा हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करूची तो से ब्लॉकेज को बा से ब्लॉकेज को एटा कोन करिवो ना जनरली ओपन कर दो सो दैट अदा रस रे नाइट्रिक ऑक्साइड एंड अदा रस जदि हम छेची कि इमिडिएटली देई दोचे ताले किछि परिमाण रे मेडिकल जीवा पर्यंत लोक को दैट इज स्टेटस हाउस थैंक यू तो जनरली अदा रसटा गोटे माने बहुत इंपोर्टेंट है मन रखिता तापर मेडिकल को गला पर दैट इज डॉक्टर एस्पिरिन एंड सॉर्बिट्रेट ए सब जीवतले जाके पे दियंती जहा फल कि दैट इज जदी ब्लड क्लॉट कोन से कज रो हे जइतिबो बा आर्टरीटा ब्लॉक हेतिबो देन ताको खोली जिवो हला बट मन रखिबो क्वेश्चन तुम पचारि परिबो जनरली केतबळे हमर हार्ट रो वाल टा एएनएफ रिलीज करिवो जेतबळे ब्लड प्रेशर इंक्रीज ना डिक्रीज स्ट्रिक्टली मन रखिबो जेतबळे ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज the wall of the heart will release ANF पूरा स्ट्रिक्टली गोटिए कथा जेतबळे हार्ट रे ब्लड प्रेशर इंक्रीज करिवो सेतबळे ही ANF रिलीज होबो एंड फुल फॉर्म ऑफ ANF इज आर्टेरियल नाइट्रिक यूरेटिक फैक्टर चलो बढ़िया ठीक अछि हला हार्मोन टा गोटे नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हला भूल रे कहइबोनी कि क्वेश्चन जदी पचार दितो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इनकरेक्ट ता भीतर लिख दितो नॉन न्यूट्रिएंट हार्मोन इज ए न्यूट्रिएंट केमिकल बोली हार्मोन इज ए नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल पूरा लेखि के रखो चलो a pregnant female deliver a baby who suffers from the stunted growth mental retardation low intelligence quotient and abnormal skin generally गोटे pregnant woman जो पिला को जन्म दउची से पिला केस रे कोन हितै पारे आइदर मेंटल रिटार्डेशन हे पारे बोलसे मेंटली डेवलप ही न थाई पारे बढ़िया समस्त आंसर पळे आसला कोन पे लिपिका डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट राइट जदी मदर कोनसी कॉज रु
ताकर डाइट रे आयोडीन रो डेफिशिएंसी होउची बा आयोडीन रिच फूड खाउ नांती इन दैट केस रे मदर कर जो रहिला थायराइड ग्लैंड तो थायराइड ग्लैंड जो बटरफ्लाई शेप रे रहिला तो थायराइड ग्लैंड रो जनरली थायरॉक्सिन हार्मोन बा ताको हमें कहूचे T4 हार्मोन सिक्रेशन बहुत कम हबो एंड थायरॉक्सिन हार्मोन रो डेफिशिएंसी हला हमें ताको कहूचे हाइपोथायराइडिज्म एंड इन हाइपोथायराइडिज्म केस रे पेट भितर थिबा पिला ऊपर ही तार इंपैक्ट पड़े बढ़िया ए देन को कि लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फॉर एग्जांपल इन एनी केस जेमति कि हमें देखि छै डबल रे खली आउ मास्ट्रियो खली पूरा हाइट हेला को मास्ट्रियो देखिथिबो आई थिंक पो माने देखिथिबो खली और मास्ट्रियो तांको भीतर किए होची गिग्नाटिज्म कंडीशन और कहार ड्वार्फिज्म कंडीशन इट मींस कहार ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन इज लो एंड कहार ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन इज हाई खली एंड मास्ट्रियो भीतर लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एमडी कॉसर एस मी मतलब हाई सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन तो हमें जानी चाहिए जितने खली ग्रोथ हार्मोन हाई सोनालिका राइट सोनालिका इंडियन दैट इज खली केस रे कोन होय ना ग्रोथ हार्मोन एते पीक लेवल थाए कि दैट इज ताकू कहै छै गिग्नाटिज्म एंड गिग्नाटिज्म अधिका ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हे गेले भी गोटे डिजीज देखिबो खली रो गोड़ गुडा कोन पूरा पतला पतला गोड़ को चाली परन ठीक से जेते गिग्नाटिज्म कंडीशन हबो बा ग्रोथ हार्मोन पूरा सिक्रेशन बा पूरा मुंडो बाजिबो जे कि ऊपर कोहिली ना खली दैट इज खली तो सेई केस रे दैट इज गोड़ गुडा को थीन हे जिवो लिम्स टा पूरा लोअर लिम्स टा पतला पतला हे जिवो आ एपिफाइटल सेल टा क्लोज हे जिवो तो जनरली कोन होय ना सेई केस रे हां ओके पतला पेयर राइट चलो नेक्स्ट गिग्नाटिज्म और ड्वार्फिज्म मास्ट्रियो होची ड्वार्फिज्म बा ग्रोथ हार्मोन टा लो सिक्रेशन हो नेक्स्ट चलो सिलेक्ट द आंसर व्हिच इज करेक्टली मैच द एंडोक्राइन ग्लैंड विथ द हार्मोन इट सीक्रेट एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन आर पचर कोन आंसर कोडा करेक्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज हुए ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी पढ़ो बोल से खली ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट खली द पावर ऑफ इंडिया द ग्रेट खली राइट खली इज द पावर ऑफ इंडिया केते ना किए कहलानी खली किए कहलानी खिल्ली किए कहलानी खोइली प्रियंका ना के ओडे खिल्ली ओके कोन आंसर एंटीरियर पिट्यूटरी तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होनी हमें पढ़ी पूरा बुढ़ा हेलेनी कि ऑक्सीटोसिन या भासोप्रेसिन बा ऑक्सीटोसिन जो लव हार्मोन टा जनरली कोट रिलीज हो पोस्टीरियर पिट्यूटरी एटा तो हबनी एटी ही भूल देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन हमें जानि छे पूरा स्ट्रिक्टली ग्रोथ हार्मोन विल रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी एटी ही भूल बाहर थायराइड ग्लैंड रिलीज करे कोन थायरॉक्सिन परफेक्ट एंड थायरॉक्सिन जदी कम सीक्रेट हबो दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथायराइडिज्म एंड द डिजीज इज कॉल्ड एज गॉइटर बा ओडिया रे गळ गंड बा तंटीटा फुलिला भलिया देखा जिवो चलो एंड corpus luteum this is the ruptured graphian follicle and the corpus luteum will release progesterone so here testosterone तो एटा भी इनकरेक्ट तो जनरली corpus luteum टा progesterone रिलीज करे मोर क्वेश्चन जदी एटी पचारिया सपोज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ corpus luteum व्हाट इज द फंक्शन ऑफ corpus luteum इन द फीमेल corpus luteum रो फंक्शन कोन सर इंक चेंज करंतु प्रीति जोशना ओके कोन अबाउट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ progesterone इन फीमेल चलो देवाशीष सूर्य चंद्र 135 वाचिंग चलो बढ़िया कौन हम प्रोजेस्टेरोन काम कौन सपोज इजी कॉन्सेप्ट यार सपोज दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दिस इज द यूटेरस एंड दिस इज द यूटेराइन वॉल एंड दिस इज द वाजाइना जनरली corpus luteum रिलीज करिवो कौन प्रोजेस्टेरोन and the most important function of progesterone to maintain the corpus luteum and generally जेहुट हमें जानि छे that is the blastocyst बा जो एम्ब्रियो टाको हमें जस्ट भाबो एम्ब्रियो बोली blastocyst अटैचमेंट हबो कोठी एंडोमेट्रियम लाइनिंग रे तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मोर एंड मोर प्रोलिफरेट करिया पई प्रोजेस्टेरोन रो काम प्रोजेस्टेरोन इज इंपोर्टेंट टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग बा थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग चलो
तो जेतेबेले जदि एवरी मंथ रो साइकिल रे कोन होय ना एवरी मंथ रो साइकिल रे कर्पस लुटेम डिजेनेट हे जो 1 तारिख वाला को देन जेमति कर्पस लुटेम कंप्लीटली डिजेनेट हे जिवो एंडोमेट्रियम लाइनिंग टा पूरा भाजाइना देकी दैट इज फ्लूइड देकी रिलीज हो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड हम जाउ कोचे बट जेतेबेले जनरली गोटे हैप्पी न्यूज पाई जिवो कोन हैप्पी न्यूज जेतेबेले ब्लास्टोसिस्ट से अटैचमेंट हेतिला बा सेही मंथ रे सेक्स करा हेछि एंड सेही मंथ रे दैट इज फर्टिलाइजेशन हेछि एंड सेही मंथ रे ब्लास्टोसिस्ट अटैचमेंट हेछि तो ब्लास्टोसिस्ट रो जो ट्रोपोब्लास्ट रहला ट्रोपोब्लास्ट विल रिलीज that is HCG and HCG will give the signal to the corpus luteum and the corpus luteum rather than dying मरिया को जाउथिबा समय रे जेमते हैप्पी न्यूज पाइबो कि जाहाउ ए मास रे म मरिबिनी then rather than dying it will more proliferate पूरा खुशी रे नाचिबो and it will release more and more and more and progesterone then more and more and progesterone कोन करिवो that is endometrial line को मेंटेन करिवो बढ़िया अछि पायल गुड जॉब तृप्तिमयी सर पिला माने लाइक करि नांती कि को महाशय से लाइक करना थी तांको हमें स्टेज ऊपर इनकम दैट इज तांको वेलकम करबा कि लाइक करना थी देवाशीष पक्का करथिबे चलो देखो मु प्रथम रु कहि छी पुनी पिला भाबिबे कि सर लाइक ता कोन पय मते बहुत मैटर होची किछि मैटर करेनी तम मानको प्रेजेंस मैटर करे लाइव जदी तम माने 100 200 जॉइन करी जदी एक भी लाइक हेतु हम किछि मैटर करिवे ओनली एंड ओनली मैटर होची तमे माने बस शुभलक्ष्मी चलो एटा क्वेश्चन रिपीट हैला चलो नेक्स्ट जीवा ओके एटा देखो आइडेंटिफाई द हार्मोन विथ द करेक्ट मैचिंग सोर्स एंड फंक्शन को कोटा होची मैचिंग बढ़िया क्वेश्चन वॉइस ऑफ कृष्णा लक्ष्मी लिपिका पिंकू सर गो टू द सेफ जोन चलो कौन हम आज हम टार्गेट करिया 150 प्लस हला 135 जेमति कि क्लास एंड पर पूरा 150 हे जाइथियो चलो कौन हम ऑक्सीटोसिन इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ एंड मेंटेन द मेमोरी ग्लैंड मेलाटोनिन पिनियल ग्लैंड जनरली हम जानि छे मेलाटोनिन रिलीज करियो पिनियल ग्लैंड ये रेगुलेट द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल ठीक अछि प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस लुटेम रिलीज हो स्टिमुलेशन द ग्रोथ ऑफ एंटीरियर फीमेल ठीक है एटा इनकरेक्ट लिखो ऑक्सीटोसिन ता पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज हुए एंड ग्रोथ एंड मेंटेन मेमोरी ग्लैंड रो हेल्प करिवो किछि नै तो इनकरेक्ट पचारो एटा इनकरेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन इनकरेक्ट लिखो को इनकरेक्ट आंसर दियो इनकरेक्ट डी होबो देन डी राइट डी परफेक्ट दैट इज आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जहा को पूरा बहुत स्वीटली कहूचे एएनएफ हार्ट तो कौन रिलीज करछु ना हार्ट मु रिलीज करबी एएनएफ दैट इज हमर हृदय भी गोटे हार्मोन रिलीज करे आ से हृदय रो हार्मोन होची एएनएफ मन रखो पूरा तो मुझे पचारिबो हृदय रो हार्मोन किए दैट इज तमे आंसर दबो हृदय रो हार्मोन होची एएनएफ राइट एंड एएनएफ जनरली वेंट्रिकुलर वॉल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर आर्टेरियल वॉल चलो नेक्स्ट फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शन कैन कॉज द एक्टिवेशन ऑफ जनरली फ्लाइट और फाइट जेतोले तुम युद्ध करूछो आ कोनोसी गोटे माने इमरजेंसी पट किना जाउछो रोड ऊपर तुम गोटे कुकुर देखाई गला पट किना जाउछो तुम गोटे माने घोष देखाई गला तो इन दैट केस रे कोन हुए कि नले रात रे फोन चलुछो घर लोक पट किना कबाटा खोल देले तो सेही केस रे जनरली को रिलीज हो कोन आंसर फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन क्वेश्चन आसीबो आराम से फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन कैन कॉज द एक्टिवेशन ऑफ हमें जानि छे दैट इज द एड्रेनल ग्लैंड व्हिच इज लोकेटेड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी रो ऊपर लोकेटेड अछि एंड एड्रेनल ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप दैट इज द कॉर्टेक्स एंड अनदर वन इज दैट इज मेडुला एंड एड्रेनल मेडुला रो रिलीज ऑफ हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज एड्रेनालिन तल कोन आंसर in adrenal medulla leading to increase the secretion of epinephrine and norepinephrine answer is C पूरा आंसर देखा होछ तम आगे कोन हबो इंक्रीज बढ़िया एंड एई तो क्वेश्चन एड्रेनल ग्लैंड रो क्वेश्चन आसियो माने आखी मुजी की तुम देखिबो एड्रेनालिन आसियो माने एड्रेनालिन कोन भाई रिलीज होइतो दैट इज डर भय एई टाइम रे रिलीज हो बा हमें ताको कहि पारे इमरजेंसी हार्मोन बोली हला इमरजेंसी टाइम रे जनरल रिलीज हुए एंड आल्सो भी हमें कहि पारे स्ट्रेस हार्मोन एई यदि क्वेश्चन पचारबो which plant hormone is otherwise called as stress hormone देखिए को कि जनरली which plant hormone is otherwise called as stress hormone ऑक्सिन जिबोलिन साइटोकाइनिन एथिलीन एब्सिसिक एसिड which plant hormone is otherwise called as stress hormone पायल ट्रिपल एफ राइट फ्लाइट फाइट फियर एमडी कोसर बढ़िया
which stress which hormone is authorized, which plant hormone, abscisic acid. Then what ki which plant hormone is important for the ripening of fruit, which plant hormone is important for the fruit ripening. Ba me fruit ripening hormone kaha koche, fruit ripening hormone dwarika, that is fruit ripening hormone is called as okay. Then mate को कि generally RNA interference technique रे, RNA interference technique रे को नेमाटोड पे RNA interference technique यूज कराउतला. RNA interference technique is used for the which process, हुए प्रताप सेमती हुए जनरली समस्त लाइफ रे सेमती हुए. चलो कोन हबो RNA हाँ एथिलीन है, fruit ripening hormone is ethylene and stress hormone is abscisic acid and that is for the internode elongation. बा जनरली जदि गोटे आखु चाष हम करूछ एंड आखु रो स्टेम को एलोंगेशन करबे जत्ते बड़ बड़ आखु हबो दैट इज मार्केट रो वैल्यू सेते बढ़िबो. सो दैट टू द एलोंगेट ऑफ द इंटरनोड सुगर केन केस रे भी हमें यूज करा जाय काकू जिबोलिन, राइट. द आंसर इज मेलाडोजाइन इनकॉग्निसिया, राइट. RNA interference technique that is used for the meladosine इनकॉग्निसिया. बढ़िया. देन मते को कि जनरली जो फास्ट ट्रांसजेनिक काउ प्रोडक्शन कराय था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द काउ बाय द बायोटेक्नोलॉजी प्रोसीजर रे जोटा प्रोडक्शन करथला. नेम ऑफ द काउ बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस रे फास्ट ट्रांसजेनिक काउ रो नेम कोन थिला, रोजी. एंड रोजी रे जनरली केते ग्राम रो प्रोटीन मिलुतला, केते ग्राम प्रोटीन पर लिटर रोजी. ओके रोजी रे कोन आंसर 2.4 ग्राम पतित भवन. बढ़िया ठीक है. देन मत कि स्किन, स्किन इज ए फिजिकल बैरियर ना फिजियोलॉजिकल बैरियर ना सेलुलर बैरियर ना साइटोकाइनिन बैरियर. स्किन इज ए फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर. हमें जनरली जानि छे फिजिकल बैरियर आर देयर, फिजियोलॉजिकल बैरियर आर देयर, सेलुलर बैरियर आर देयर, साइटोकाइनिन बैरियर आर देयर. सो जनरली स्किन टाको कोन कह जाय ब्यूटी, राइट. Skin is the physical barrier and mucous coating of a gastrointestinal tract. These are also physical barrier. Then मत को give an example of physiological barrier. सस्मिता physical barrier answer. Skin टा गोटे physical barrier. जदि कौन से non specific कौन से टाइप रो एंटीजन आसियो माने बा कौन से फॉरेन पार्टिकल आसियो माने हमर स्किन टा आगो गोटे फिजिकली ताको बैरियर करबो. सो दैट स्किन इज द फिजिकल बैरियर. म्यूकोस कोटिंग आल्सो. देन नेक्स्ट चलो हाँ कौन होला टीयर फ्रॉम द आई. दैट इज कौन फिजियोलॉजिकल बैरियर होची टीयर्स फ्रॉम द आई, सलाइवा इन द माउथ एंड एसिड इन द स्टोमक. दीज आर द फिजियोलॉजिकल बैरियर. देन मत को व्हाट इज द पीएच ऑफ आवर स्टोमक. फटाफट आंसर दियो व्हाट इज द पीएच ऑफ आवर स्टोमक एंड व्हिच सेल इज रेस्पोंसिबल टू मेंटेन द पीएच इन द स्टोमक. टीयर. बढ़िया. ओके okay and don't waste your tear. कौन होला less than 3 that is 1.8 and pH of stomach is 1.8. सूर्य. बढ़िया 1 point right. that is okay. then मत को कि which cell in the stomach बा हमें जनरली जदी कहया gastric gland रे 3 टाइप रो सेल देखा जाय, mucous neck cell, peptic or chief cell or zymogen cell, parietal or oxygentic cell. then मत को कि which cell is responsible to maintain the pH in the stomach. Stomach रो pH maintain करिया पे which cell is responsible. Goblet sir please me. मधुस्मिता कौन आंसर पेप्टिक. देखो म्यूकोस नेक सेल. देखो जनरली एइतरे कौन भूल भाल आंसर आछी तमरो. देखो सपोज हियर इज द स्टोमक फॉर एग्जांपल एंड स्टोमक रे हम जानि छे को ग्लैंड अछि गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड जनरली गैस्ट्रिक ग्लैंड रे 3 टाइप रो सेल देखा जाय. हैला नंबर 1 सेल होची कोन म्यूकोस नेक सेल. म्यूकोस नेक सेल कोन करे हमें जानि छे स्टोमक टा होची पूरा हाईली एसिडिक एंड सेति की 1.8 एसिड रो 8 पॉइंट एसिड रो हाथ रे पकले हाथ जळी जाय. सो म्यूकोस नेक सेल रो जो गोटे म्यूकोस रिलीज हुए जे की कोन करे स्टोमक रे गोटे कोटिंग कर दिए. कोटिंग कर देले कोन होबो ना स्टोमक आउ हमर निजर वाल को आउ दैट इज डाइजेस्ट करि परिबोनी. देन सेकंड टाइप ऑफ सेल पेप्टिक और चीफ सेल. पेप्टिक और चीफ सेल जे की रिलीज करिवो कोन
पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन इज इंपोर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ, पेप्सिनोजेन टा कन्वर्ट हुए पेप्सिन को एंड पेप्सिन इज इंपोर्टेंट फॉर द प्रोटीन। देन लास्ट होची कोन पैरेटल सेल, पैरेटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल इज इंपोर्टेंट टू मेंटेन द, बिकॉज पैरेटल सेल रिलीज करे HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। सो आंसर इज HCl को मेंटेन करे पे कहार मुख्य भूमिका पैरेटल सेल रो हैला। चलो सार खाली जियो नेम कहउछन जम्मा बिल्कुल नो गौरव, गौरव विजर्ड जम्मा एटा बिल्कुल नो, स्किप हे जाउछ तम नाटा हैला। पुओ जियो समस्त समान, जेंडर इक्वालिटी, ताले एटु गोटे क्वेश्चन हम पचारिया, दैट इज व्हाट इज द मैरेजेबल एज फॉर द मेल एंड व्हाट इज द परफेक्ट मैरेजेबल एज फॉर द फीमेल। आज टी पिंकू भाई की डाकंतु, पिंकू भाई आज पूरा 100% आसीबे, तम मानकर वेलकम रखिया करी गारंटी। तो दैट इज को कि व्हाट इज द मैरेजेबल एज फॉर द मेल एंड फीमेल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हम जानि छे दैट इज फीमेल मानकर मैरेजेबल एज केते, मेल 21 to 24 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, फीमेल इज 18 इयर्स एंड मेल इज 21, राइट। फीमेल मानकर जनरली 18 वर्ष, मेल मानकर 21 वर्ष। बट हम माइंड क्वेश्चन আছে बट व्हाई जदी वोट दी जण 18 वर्ष देई परछंती, बट व्हाई द फीमेल सर। मधुस्मिता आउतर क्वेश्चन पठाओ, दैट इज ओके ठीक अछि। तो बट चाहि जाइछि ओ दैट इज फीमेल सर, जनरली फीमेल माने जदी टिके मैच्योरिटी पळे आसंती ध्यान दो। मेल 165 वाचिंग, देन आजिरो टारगेट हम करिया 200। चलो 18 21 फीमेल मानकर 18 एंड मेल्स मानकर 21। देन मते को कि इंडिया गवर्नमेंट केबे लीगलाइज करथिला एमटीपी को, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय इट इज अदरवाइज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अबॉर्शन को बा इंड्यूस्ड अबॉर्शन को इंडिया गवर्नमेंट केबे लीगलाइज कराइतला। को आंसर कोन हबो 1951 डॉक्टर प्रभात इंडिया गवर्नमेंट एमटीपी को लीगलाइज करथिला 1971 सौम्य 71, राइट। एंड केतरा कंडीशन थिला, को कंडीशन तुम एमटीपी करि परिबो मते को कि किछि जण जार मन अछि को कि एमटीपी टा को कंडीशन रे दैट इज लीगल। जदी इन केस समवन इज सॉरी टू से दैट इज जदी कोनसी केस रे रेप हेछि एंड रेप केस रे लीगलाइज करि हबो बा एमटीपी करि हबो, अबॉर्शन करि हबो। एंड आल्सो जदी कोनसी केस रे दैट इज जो डेवलप करूची यूटरस रे फिटस रो जदी कोनसी जेनेटिकली प्रॉब्लम अछि जहा पर कि जन्म नेले जीवन सारा स्ट्रगल करिया पड़िबो, हाथ नथिबो गोड़ नथिबो, से दैट केस रे भी लीगलाइज। एंड दैट इज जदी कोनसी केस रे पिला जन्म पळे मां ऊपर मां हेल्थ ऊपर प्रॉब्लम अछि। मधुस्मिता मु तुम क्वेश्चन देखिली बीएससी होम साइंस रो गवर्नमेंट जॉब अछि ना नहीं, मधुस्मिता ए रिलेटेड टिके क्लास पर हम डिस्कशन करिया, तुम क्लास रे रहितो एंड 100% हम तुम क्वेश्चन आंसर देबी। चलो हला देखिली तुम क्वेश्चन, मु ऑलरेडी तुम क्वेश्चन देखि भी थिली। ग्रेसफुल गॉसिप मार्क भलो हिनी, इट्स ओके 50% ऊपर को अछि दैट्स एनफ। तो कोन कहली ना ए केस रे लीगलाइज। एंड फेटल डिसऑर्डर जदी फिटस रो डिसऑर्डर अछि से केस रे तमे करि परिबो। बट जदी तमे दैट इज हमें गोटे कहि पर अमीनोसेंटेसिस, व्हाट इज अमीनोसेंटेसिस टर्म को, व्हाट इज अमीनोसेंटेसिस कोन हला लीगलाइज को केस रे लीगल को केस रे इलीगल जाना पड़ी गला। जदी तमे जियो देखि कि ताको कन्या भ्रूण हत्या जाको हम कहूचे, सेही केस रे जदी तमे एमटीपी करछो बा इंड्यूस्ड अबॉर्शन करछो, इट इज कंप्लीटली इलीगल। चलो टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फिटस, टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फिटस व्हेन द प्रेगनेंसी इज पढुची प्रीति जोशना तुम कमेंट पढुची, दैट इज जेतबेले टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फिटस इज कॉल्ड एज अमीनोसेंटेसिस। एंड जनरली अमीनोसेंटेसिस को तुम जदी गलत वे यूज करछो फॉर द इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इट इज आल्सो इलीगल। ओके अमनियोटिक फ्लूइड को नै कि टेस्ट करा जाय, राइट। बहुत सारा हमरो सोसाइटी रे अछंती जो माने कोन करा होची ना अमीनोसेंटेसिस करी कि जेतो जानि दोचंती कि पेट भीतर पिला फीमेल अछंती, फीमेल मानु को दैट इज किल करा होची। बट जदि हम एग्जैक्टली देखिया हम सोसाइटी रे मेल एंड फीमेल मानकर बहुत बहुत सेम रोल इपोज, यानी फीमेल माने आज के डेट रे देखि जोड जोड पहुंचलनी एंड आगु भी पहुंचछन एंड हम समस्त फीमेल मानकर क्रिएट। सो यू हैव टू रेस्पेक्ट द फीमेल्स। एंड बेसिकली आगुरु लोक मानकर माइंडसेट थिला कि फीमेल्स मानको मैरिज करिया पड़िबो एसो, बट लेट इट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्वड इन शुगर मेटाबॉलिज्म। चलो एआईपीएमटी 2015 रो क्वेश्चन एंड आल्सो एआईपीएमटी को अगेन कराइतला री एआईपीएमटी 2015, तो सेथरे भी क्वेश्चन पढ़ाइतला, कोन बा आंसर दियो। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल टाइम रे प्रेगनेंसी काई हुएनी, ऑब्वियसली दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल हुए कोन पई, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ता रप्चर हो जाए एंड एंडोमेट्रियम लाइनिंग इज द
मेन यूट्राइन वॉल व्हिच इज इंपोर्टेंट फॉर द इम्प्लांटेशन ताकि बेबीटा बा ब्लास्टोसिस्टा इम्प्लांटेशन हबो जो जगह रे से जगहटा ही तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड एक रिलीज हो जिवो सो दैट केमति हबो हैला प्रताप मु तो मेसेज देखिली बा टॉक्सिक गेमर ब्रैकेट रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्वड इन शुगर मेटाबॉलिज्म कोन आंसर शुगर मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन रो काम अछि ग्लूकागोन रो काम अछि aldosterone राइट aldosterone रो काम नै नेक्स्ट a chemical signal that can both endocrine and neural roles epinephrine next क्वेश्चन चलो which of the following represent the correct combination without any exception आंसर कोन हबो सीबीटी मोड एबे करि देले ना आगुरु थिला सर आ 420 अछि आंसर दियो 162 रो समस्त आंसर ए mammary gland hair on the body pinnate two pairs of limbs mouth ventral gills without the operculum combination without any exception ताले कोटा हबो हमरो ए बी that is जदी कहबा that is a हबो आंसर ओके चलो नेक्स्ट which of the following animal is not viviparous that is हमें जदी देखिबा को animals is not viviparous means that means हमें जदी कहबा oviparous जो माने egg laying mammals and viviparous जो माने generally milk feed करंती तो आंसर कोन हबो which of the following animal is not viviparous flying fox elephant platypus ना whale platypus हमें ओडिया रे पढितले platypus अंडा दिए मेटाजेनेसिस रेफर्स टू मेटाजेनेसिस हजार तरह क्वेश्चन पचरालानी आ ए क्वेश्चन जहार भूल हो सीरियसली पिंकू सर आपण फ्री फायर खेलंती कि भाई रे फ्री फायर कोन म आज जानिली फ्री फायर छोटो पिला गेम तुम माने छोटो हो सो दैट तुम खेलुचो एग्जाम पर्यंत भल से फोकस करो तापर खेलिबो मेटाजेनेसिस रेफर्स टू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑकरेंस देखो आंसर ऑलरेडी तुम जाना सरथिबो समस्त का आंसर 100% रोशन तुम मेसेज मु सीन करी चलो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इट इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस एंड हम ऑलरेडी जानि छे जेतबेले तमरो 2023 रो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कशन करथिले एंड आल्सो सैंपल पेपर भी डिस्कशन करथिले सेतबेले मेटाजेनेसिस को नै क्वेश्चन थिला मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मोर सेकंड क्वेश्चन तम रहइबो मेटाजेनेसिस विल शो व्हिच फाइलम विल शो मेटाजेनेसिस पोरिफेरा सिलेंटराटा ना प्लाटीहेल्मिंथेस कोन आंसर व्हिच फाइलम विल शो मेटाजेनेसिस को फाइलम टा मेटाजेनेसिस शो करिवो सिलेंटराटा बढ़िया देन मते को कि फाइसेलिया रो अदर ना कोन व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फाइसेलिया व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फाइसेलिया फाइसेलिया रो अदर नेम कोन फाइसेलिया रो अदर नेम कोन व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वार व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आडामिसिया व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आडामिसिया फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वार आडामिसिया कोन हबो आंसर दियो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आडामिसिया शुभलक्ष्मी व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आडामिसिया sea anemone okay then what is the other name of sea anemone right what is the other name of pennatula what is the other name of pennatula sea fan right other name of pennatula is sea fan के जन आंसर sea fan sea pen लिपिका right sea pen चलो then मते को कि सिलेंडर टा रेडियल सिमेट्री शो करिवो ना बायलैटरल सिमेट्री शो करिवो What is your answer? Cylinder will show radial symmetry na bilateral symmetry ko. Cylinder will show radial symmetry or bilateral symmetry ko. Cylinder will show radial symmetry or bilateral symmetry. Answer कौन होगा? हाँ शुभलक्ष्मी bilateral symmetry. Cylinder color जोना पोनी रोशन. Okay.
तो सिलेंडर एटा विल शो रेडियल सिमेट्री मन रखिबो सिलेंडर एटा रेडियल सिमेट्री शो करिवो हला आरसीसी मन रखिबो आरसीसी माने कोन आर पर होची रेडियल सिमेट्री सी पर होची सिलेंडर एटा सी पर होची टेनोपरा रेडियल सिमेट्री होची सिलेंडर एटा और टेनोपरा हेलो रेडियल सिमेट्री विल शो सिलेंडर एटा टेनोपरा ओके देन मते को कि बायलैटरल सिमेट्री विदाउट बॉडी कैविटी के शो करियो व्हिच फाइलम will show सुबोलक्ष्मी right RCC मन रखो RCC radial symmetry cylinder टेनोपरा which phylum will show which phylum bilateral symmetry without body cavity बा bilateral symmetry show करथिबो आ माने body cavity is absent बा coelom is absent को which phylum generally bilateral symmetry without body cavity right समस्त कर platyhelminthes okay then मत को कि bilateral symmetry with false body cavity bilateral symmetry with false body cavity bilateral symmetry with false body cavity कौन हबो देखो एबे जो लाइव क्लास चलछि 7टा रु 8टा पर्यंत चलिबो 8टा परे आ गोटे लाइव क्लास हबो देन तुम से विद्यासागर क्लासेस रो लाइव चैनल को जीवो तो जो भी क्लास पई हो तो क्वेश्चन ही सेम रहबो एंड सितरे हम सर्कुलेशन रो क्वेश्चन डिस्कशन करिया डाइजेशन रो डिस्कशन करिया ब्रीदिंग रो डिस्कशन करिया संगे संगे 8टा सरियो माने भितरे जॉइन हबो चलो कोन हबो आस्की एलिमिनेस बढ़िया चलो नेक्स्ट पानी अछि की चलो दोनों सेती ओके a jawless fish which lays eggs in fresh water and whose amniosates larva after metamorphosis return to the ocean जनरली कि फ्रेश वाटर रे अंडा दिए बट मेटामॉर्फोसिस करी ओशन को पळाए को माने समुद्र रे रहउतिबो तो दैट इज ए को फिश ता समुद्र रे रुहे बट आसुतिबो कोठी कि ना फ्रेश वाटर आसी अंडा दे देला परे जनरली पूर्ण समुद्र को पळेबो कोन आंसर एटा हो साइक्लोस्टोमाटा ना ओके दैट इज साइक्लोस्टोमाटा एंड साइक्लोस्टोमाटा एग्जांपल कोन पेट्रोमाइजन लैम्प्रे माइजिन हैगफिश तो आंसर कोन हो पेट्रोमाइजन लैम्प्रे माइजिन हैगफिश सो पेट्रोमाइजन हियर इज द एग्जांपल ऑफ साइक्लोस्टोमाटा देन मते को कि सकिंग एंड सर्कुलर माउथ कारो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ 6 रु 15 गिल स्लिट्स एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिश मानको ऊपर एक्टोपैरासाइट थिबो these are examples of एटा का अंडर रे साइक्लोस्टोमाटा ना कॉन्ट्रिस्टिस ना ऑस्टिस्टिस कोन हबो समुद्र नहीं जा पाता रास्ता रे ही मर जाएंगे राइट दैट इज समुद्र रे से माने रुहती बट फ्रेश वाटर अंडर देला पर मरि जांती बट आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस तम लार्वा गुडा को समुद्र को जांती शुभलक्ष्मी पचार जॉलेस फिश कोन हबो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ ये सब कहार दैट इज इशू कहार फीचर साइक्लोस्टोमाटा रो एंड स्ट्रिक्टली मन रखिबो तमु देटी गोटे क्वेश्चन पचारे जिवो एक्टोपैरासाइट हला सकिंग एंड सर्कुलर माउथ 6 15 ग्लिस्टेड एक्सट्रोवर्ट्स ऑफ एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस एटी जदी क्वेश्चन पचारे जिवो एक्टोपैरासाइट बा पैरासाइट ता जनरली +0 ना प्लस ना माइनस ना -0 कोन हो आंसर को एट इज तमर इकोलॉजी रो क्वेश्चन देखा जाउनी कलर चेंज करंत ओके +0 ना प्लस ना माइनस ना -0 एक्टोपैरासाइट कोन हो आंसर शुभलक्ष्मी +0 एक्टोपैरासाइट बा माने पैरासाइट प्लस माइनस माने कोन कहलो हां चेंज करली बसंती एक्टोपैरासाइट माने से जनकर लाभ आ जनकर क्षति होतिबो सपोज उंकुणी हम मुंडो पर रहला दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट दैट इज द टिक ऑन द डॉग्स जदि देखिबा आम मुंडो रे उंकुणी हो कुकुर मुंडो रे टिंको हो तो ये सब एक्टोपैरासाइट रे एग्जांपल आ जनरली कुकुर रो क्षति होनी टिंको रो लाभ कुकुर रो क्षति सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्लस माइनस ठीक अछि प्लस माइनस एक्टोपैरासाइट इज प्लस माइनस कोडा वाला प्लस माइनस ओ प्लस माइनस में ऑप्शन देइनी की प्लस +0 -+0 सॉरी प्लस माइनस
प्लस माइनस ऑप्शन देनी प्लस माइनस हो आंसर देन मते को कि सपोज म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म इज कोन हो म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म इज प्लस प्लस और प्लस माइनस और माइनस माइनस और प्लस माइनस और माइनस 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 जीरो कोन हो म्यूचुअलिज्म कोन हो वो कलरटा दबा ताले रेड कलर ओके म्यूचुअलिज्म कोन हो म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म कहार एग्जांपल प्लस प्लस समस्त आंसर तो आस्थिबो म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस हो बढ़िया राइट म्यूचुअलिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ प्लस प्लस चलो सेमटी हम जो देखिबा कंपटीशन कंपटीशन रे जनरली कोन हो माइनस माइनस ना प्लस माइनस कंपटीशन कंपटीशन रे कोन हो माइनस माइनस ना प्लस प्लस कंपटीशन रे कोन हो आंसर equally benefited right both are equally benefited to each other and example of mutualism हम कहि परिया algae and fungi okay कोन है आंसर ठीक अछि कंपटीशन रे माइनस माइनस दी जन कंपटीशन करिवे दी जन करे ही प्रत्याशा जम्मा भूलिनी प्रत्याशा 100% तम अछ हमस एंड जम्मा भी भूलिनी चलो कंपटीशन माइनस माइनस हला दी जन जदी गोटे रिसोर्स ऊपर कंपटीशन करिवे तो 100% दी जन कर माइनस ही हबो तो मते को कि जनरली गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कोन थिला व्हाट वाज द गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बा गॉस कर जो प्रिंसिपल थिला अकॉर्डिंग टू से प्रिंसिपल को का मन अछि एमडी कोसर भूमिका मिनती को कि वॉइस ऑफ कृष्णा गॉस कर जो प्रिंसिपल थिला शुभम मिश्र हेलो सर न्यू हियर वेलकम शुभम जनरली गॉस कर जो प्रिंसिपल थिला व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ गॉस एक्सपीरियंस मन अछि पूरा 100% तुम ना समस्त मोर सीक्वेंशियली मन अछि सीरियसली मु समस्त कमेंट देखुची बट सब कमेंट हम रिपीटेशन करि परियानी बट मु समस्त कमेंट देखुची आ समस्त नाम मोर पर मन अछि चलो कोन हो गॉस कर जो प्रिंसिपल थिला कोन हो टू क्लोज रिलेटेड स्पीशीज जनरली टू क्लोज रिलेटेड स्पीशीज कैन कोएक्सिस्ट टुगेदर देवाशीष यस टू क्लोज रिलेटेड स्पीशीज समस्त जदी कहबो सर भूली गलोनी टोटली पूरा सब केते पढे पडियो टू स्पीशीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएक्सिस्ट two close related species compete for the same resource cannot exist together जदि मु एंड मोर गोटे कॉपी एटी ठिया करा जिवो एंड हम गोटे रिसोर्स ऊपर डिपेंडेंट करछु तो हम दी जण भितर कोन हबो हम दी जण केबे बेले को एक्जिस्ट करी बंची परिबुनु निहाती हम भितर कंपटीशन हबो जे जीतिबो से ही दैट इज रिसोर्स को यूज करबो एंड जे एलिमिनेट जो से पळेबो एटा थिला होची गॉस कर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देन ताको परे अरमान आई एम न्यू सर वेलकम अरमान देन होची कोन वॉइस ऑफ कृष्णा टू स्पीशीज व्हिच कम्पीट टीटा क्लोज रिलेटेड स्पीशीज गोटे ऊपर जदी डिपेंडेंट करी बचुछती एबे तो से भाई को डाकंतु प्लीज सर ओके तो एया होची आंसर हला एंड मन रखिबो गॉस कर जो प्रिंसिपल ऊपर आ गोटे साइंस कर प्रिंसिपल थिला दैट इज द रिसोर्स पार्टीशनिंग थ्योरी मार्क आर्थर कर रिसोर्स पार्टीशनिंग थ्योरी से कहले कि ऋतु सोनम राज महारान वेलकम टू एवरीवन जति न्यू स्टूडेंट अछंती तो रिसोर्स पार्टीशनिंग थ्योरी ए थिला दैट इज जदी बेसिकली गोटे रिसोर्स ऊपर बंचुछंती ताले भी रिसोर्स पार्टीशनिंग ए थिला कि नाही सेमति नाही क्लोज रिलेटेड स्पीशीज ता गोटे रिसोर्स ऊपर कम्पीट करछंती कोएक्सिस्ट करि परिबनी सेमति नाही दैट इज ऑल से माने बंची परिबे दैट इज सेमानकर रिसोर्स को पार्टीशन करिवे ई ए खाइबो सी से खाइबो एगुडा को बंची परिबे मधुस्मिता कहिए नो टू स्पीशीज कैन एक्चुअली प्रत्यक्ष बढ़िया चलो नेक्स्ट आगु जिबा बॉडी हैविंग द मेशवर्क ऑफ सेल्स इंटरनल कैविटी लाइंड विथ खाद्य एटा नेक्स्ट चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा जनरली ए फीचर्स भितर कोटा फाइलम आर्थ्रोपोडा रा फीचर्स नुहो को चलो कोन आंसर आंसर दियो समस्त पढ़ो क्वेश्चन को आर्थ्रोपोडा 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ो चलो कौन हबो ओके चलो कौन है आंसर पारापोडिया तो आंसर हो
काइटिनस आमे जानि जे आर्थ्रोपोडा मानकर एक्सोस्केलेटन बा जो रहिला से माने काइटिनियस मेटामोरिक सेगमेंटेशन शो करती बा बॉडी सेगमेंटेशन शो करे जॉइंटेड अपेंडिसेस देखा जाए बट पारापोडिया देन मते को कि पारापोडिया इज एन एग्जांपल ऑफ पारापोडिया इज एन एग्जांपल एनिलिडा बढ़िया श्योर श्योर रोशन टिके मते मेसेज कर दो हम सीन करी पारापोडिया हेल्प इन स्विमिंग ओके चलो नेक्स्ट बढ़िया अछि नेक्स्ट जीवा which of the following characteristics feature is always holds the true corresponding the group of animal देखो एनिमल किंगडम रो क्वेश्चन कोन अब आंसर दियो समस्त आंसर सुनो तमरो जदी 8 लाइव ऑन हबो जेते जदी लाइव कटिला सो दैट इमीडिएटली संगे संगे तमर आत्तार ओटा लाइव अछि तो विद्यासागर क्लासेस लाइव सेशन जाय कि जेम देखिबी सब पिला सेठी जॉइन करथिबो चलो कोन हबो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कहार बोनी एंडोस्केलेटन होची ऑस्टिसाइड कार्टिलेजिनस रो कॉन्ड्रोसाइट्स विविपारोसिस मामालिया फॉरम गेट पिक्चर ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर द करेस्पोंडिंग ग्रुप possess mouth with the upper and lower jaw chordata three chamber heart is reptilia कौन आंसर दैट इज ए ओके कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन चलो कारण विविपारस अंडर ओविपारस भी आसी होची अपर एंड लोअर जॉ कोडाटा भितरे बहुत सारा जॉ अछि जोटा विदाउट द जॉ अछि कोडाटा अंडर साइक्लोस्टोमाटा एक्सेप्शन पळे आसीबो चलो थ्री चैम्बर हार्ट होची रेप्टिलिया बट एक्सेप्शन पळे होची क्रोकोडाइल तो समस्त रो किछि ना किछि एक्सेप्शन अछि बट कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन रो किछि एक्सेप्शन नाही ओके चलो नेक्स्ट कोन हबो ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो कौन अब आंसर पेट्रोमाइजन एक्टोपैरासाइट इस्थियोफिश होची टेरेस्ट्रियल लिमुलस होची बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस लिविंग फॉसिल लिमुलस एग्जांपल ऑफ आर्थ्रोपोडा कोटा होची करेक्ट पचा जा कौन है आंसर समझती करो 17A एक्टोपैरासाइट साइक्लोस्टोमाटा रेडी चलो एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम प्रीवियस करिছে हाउस फ्लाई बटरफ्लाई दैट इज टाइटाफ्लाई सिल्वर फिश ना सेंटीपेड मिलीपेड स्पाइडर स्कॉर्पियन इंसेक्टा बी ऑप्शन सेम फाइलम अंडर का भीतर कोटा जाउची स्पॉन्ज सी एनोमन स्टारफिश ना प्रॉन स्कॉर्पियन ना लोकुस्टा ना ऑर्थ्रोम ना टेपो ना द मलेरिया पैरासाइट अमोइबा मस्किटो को कोन हबो सेम फाइलम अंडर कोडा जाउची हैला को सेम फाइलम अंडर की जाउची प्रॉन स्कॉर्पियन लोकुस्टा कोन आंसर हबो दियो समस्त आंसर मिस्टर दास 10th रे 72 76 8 14 48 तो नियत रूपे तुमको सही 155 प्लस टारगेट प्रताप डाकिया नेक्स्ट लाइव रे डाकिया हला हा पर जो लाइव ता हो सतरे डाकिया तो प्रॉन हो आंसर समझिंग रो ए मलेरिया पैरासाइट अमोइबा एंड मस्किटो ना प्रॉन स्कॉर्पियो लोकुस्टा भी हे परिवो प्रॉन स्कॉर्पियो लोकुस्टा भी हे परिवो ना बीएससी पई जदी तुम ऑनर्स नौ जो क्रिक ब्रो तुम बॉटनी एंड जूलॉजी नियो जा पळे तुम अलगा पई प्रिपरेशन हे परिवो मतलब प्रॉन स्कॉर्पियो लोकुस्टा भी हे परिवो वॉइस ऑफ कृष्णा सी चलो गोटे मिनिट टिके डाकी दबा गोटे सेकंड वेट करो कटी गला पूरा
वैदत महत सर टुडेज में फर्स्ट क्लास आई थिंक तुम क्लास भल लगी हम बैक ऑप्शन मानली बट हेलानी प्रीति पवन 87 71 जो मैंने पिंकू भाई की देखिया चाहते एटी देखि दियो 87 and 71 158 80 तमर एवरेज 80 आसुची सार्थक तो 80 आसुची माने तो भाबो 145 प्लस रखो 145 150 प्लस तो सुनो जो 119 जन एबे वाच करछो एमडी कोर्सर तो बेसिकली तुम मैंने कौन काम करो दैट इज जो एबे जो लाइव होची सेकंड लाइव होची तमरा 8 रे स्टार्ट हो इमीडिएटली एटू कटिया तो तमे जाओ विद्यासागर क्लास लाइव सेक्शन जो एसएसबी टीजीटी पई लाइव होची सेतरे जॉइन करो क्वेश्चन सब समान चलो सेतरे जॉइन करो चलो एई क्लास को एटी एंड करिया सेतरे जॉइन करो हला चलो समस्त आंसर मु देबी अर्पिता डोंट वरी हो चलो सेतरे जॉइन करो संग संग मु देखिबी ओके चलो ओके वॉइस ऑफ कृष्णा एमडी कौशर थैंक यू सौदामिनी दैट इज कोन करिया चलो ओके ओके एट रखिले सेट संग संग जॉइन करो तार क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करिया हला तार क्वेश्चन नो क्वेश्चन सब समान बाकी क्वेश्चन मु ही करछि तो क्वेश्चन सब समान अछि चलो